assistance given to states is for capital expenditure alone in the form of a 50-year interest-free loan. And again, let me clarify, it was mentioned in the speech, but it perhaps has not been noticed in some quarters. It is in addition to the 4% of GDP normal borrowing ceiling which states will be allowed. So that 4% remains, 3.5 unconditional, 0.5 tied to power reforms. This 1 lakh crore is over and above that 4%. So it is additional capital expenditure money to the states. It is part of the 7.5 lakh crore which has been provided for capital expenditure. You had another point, I'm sorry. NREGA. So NREGA is classified in the government accounting system as grant in aid for capital expenditure because it is expected that some assets are created, but it is because you seem to have some discomfort with that, and that is why we have footnoted it very transparently as to what amount of it is NREGA. So if you feel that NREGA is not a very productive expenditure, if that is your opinion, then we have allowed you to make your own calculations by giving those figures separately. So we have said provisions for also includes allocations under demand-related scheme, which would vary based on demand. So that has been indicated transparently. It is for you to draw your own conclusions. 110. मैं आलोक प्रियदर्शी हूँ CNBC आवाज़ से। जो देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सबसे ज़्यादा जॉब देता है। उम्मीद की जा रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ से कि बहुत सारे रॉ मटेरियल जो खासतौर से इंपोर्ट होते हैं उनकी इंपोर्ट ड्यूटी में कट होगी। एक दो चीज़ों में जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए भी कट हुआ है और कुछ स्टील के स्क्रैप का आपने 1 साल और ड्यूटी कट को बढ़ाया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जैसे कॉपर, एल्युमिनियम जैसी चीज़ें थी जो कि इंपोर्ट होती हैं और सस्ती पड़ती हैं। उन पर इंपोर्ट ड्यूटी रॉ मटेरियल के तौर पर नहीं हुआ, तो क्या इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो उम्मीदें थी कि एक्सपोर्ट्स को लेकर जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है वो उनकी ख़त्म होती जा रही है, उसको लेकर सरकार ने क्या विचार किया था? मैं आइटम वाइज आपको जवाब नहीं दे रही हूँ, मगर ब्रॉडली मैन्युफैक्चरिंग हैज़ टू बी सपोर्टेड, एंड फॉर दैट पिछले बजट से लेकर इस बजट तक जो आइटम हमारी इंटरमीडियरी प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स है हमारे देश में उसका ज़रूरत है, उसके ऊपर हमने कुछ भी टैक्स बढ़ाया नहीं इंपोर्ट को अलग करते हुए। एक तरफा हम आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं क्योंकि भारत में जिन जिन प्रोडक्ट्स का उत्पादन हो रही है वो इंपोर्ट के नाते अलग करना सही नहीं है, मगर जिसका उत्पादन इधर नहीं है मगर वो रॉ मटेरियल है क्योंकि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ का वो आवश्यक है, फिर उसका इंपोर्ट अलग कर रहे हैं। वो ब्रॉड प्रिंसिपल है। उसी ब्रॉड प्रिंसिपल को हम आइटम वाइज देखने के बाद ही बजट में प्रावधान कर रहे हैं। इसीलिए आप इस बार जो मैं स्पीच में आइटम लिस्ट किया सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए ये नहीं समझना कि सिर्फ उन आइटम्स को दे रहे हैं बाकी ना सबको नहीं दे रहे हैं। पिछले बार जो दिया गया वो कंटिन्यू होती है इस बार। 120. Ma'am, I'm Nikunjori from Business Standard. Ma'am, there's been an allocation of 52,000 crore for Air India. Is this over and above what was sought in the supplementary demand for grants, which was 62,000 crore? And ma'am, there's been nominal GDP estimate has been 11.1. So could you please help us with what the inflation estimate is, because economic survey projects 8 to 8.5 as the real growth. And lastly, ma'am, pardon me for asking you a previous question. Last year, in the last year's budget, there was about 1 lakh crore which was expected from government's divestment in public shares in public sector banks and financial institutions. So that estimate has not been shared for this year as well as next year. So if you could please clarify. We've just had the discussion before coming here. Somnathan, on the 11 nominal GDP and other things. I'll come back to this. Okay. First, on your question of 52,000 crores, that was very much part of the supplementary estimates. In the supplementary estimates, there were two kinds of payments made to Air India. One kind related to the takeover of certain residual actual assets of Air India which have... तो ये कब तक पूरा होने वाला है? 52. Those are actual capital assets which we read.
mentioned